Hello everyone, Assalamu alaikum. I'm making this video for 3 reasons. एक, मैंने कंगना रनौत की कुछ स्टोरीज देखी ऑन इंस्टाग्राम जो कि मुझे आई फेल्ट वर वेरी अनएजुकेटेड और उसके व्यूज़ मुसलमानों के बारे में आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई सम थिंग्स. और द सेकंड थिंग इज़ आई वांट टू जस्ट गिव एन अपडेट to everybody about what's happening in Palestine and Israel. क्योंकि लोग जब कंगना जैसे लोगों की स्टोरीज देखते हैं, कंगना has 7.6 million followers on YouTube, on Instagram. तो इसका मतलब है कि लाखों लोग उसकी स्टोरी देखते हैं और उससे इन्फ्लुएंस होते हैं. तो आई वांट टू एजुकेट नॉट जस्ट कंगना बट पीपल लाइक कंगना, people that don't know what's going on, people that think कि यहाँ पे टेररिज्म हो रहा है या इस्लामिक रैडिकल टेररिज्म हो रहा है या कोई एक्सट्रीमिज्म हो रहा है. नहीं, इट्स जस्ट अ नेबरहुड दैट इज़ बीइंग टेरराइज्ड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो कि इजराइल कर रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा. और जो सारी मिसकंसेप्शंस हैं, आई वांट टू क्लियर दैट अप. एंड फाइनली इन द थर्ड सेगमेंट आई जस्ट वांट टू गिव सम सॉल्यूशंस that maybe some things that we can do. There's no solution that we can provide, but there's little things that we can do, such as educating ourselves maybe, or maybe donating to charities that can help the Palestinians. So there's little things that we can do that can make a difference, because we can make a difference, because everybody has to stand up for this and at least do something. If not, take an action, then maybe just educate yourself. But starting with Kangana Ranaut, उसकी स्टोरी जिसमें कंगना मुस्लिम्स को कह रही है दैट ऑल मुस्लिम्स स्टैंड फॉर हमास, जहाद एंड टेररिज्म. नाउ एंड आई वाज रीडिंग दिस और मैं सोच रहा था कि कोई इंसान, ऑलमोस्ट 2 बिलियन मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड, उन सारों के बारे में एक जनरलाइजेशन कैसे कर सकता है कि भाई ये सारे ऐसे होते. That means you're saying that somebody that makes YouTube videos or, I teach history and English, मैं एक terrorist हूँ, मैं इस्लामिक टेररिज्म में बिलीव करता हूँ, या मैं किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म में बिलीव करता हूँ, या हज़ारों करोड़ों ऐसे लोग हैं that aren't extreme. And Islamic radical terrorism जो term बना दी गई, that she keeps on floating around and a lot of people in the world keep floating around, वो term एक रिलीजन को डिस्क्राइब करने के लिए आपने बना दी. व्हाट अबाउट हिंदू टेररिज्म और क्रिश्चियन टेररिज्म और व्हेन द इजरायलीज आर डूइंग स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म. तो ये टर्म्स को हमें दोबारा री-इवैल्यूएट करना चाहिए और सोचना चाहिए व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, बिकॉज नो रिलीजन इन द वर्ल्ड preaches terrorism, and especially Islam. Like, I wanted to talk about some of the things that Islam teaches us, which is compassion. We're taught in Islam that if you've taken over a state, so you're supposed to give them food, shelter, take care of them. You're not supposed to kill them. अब Israel में क्या हो रहा है इस वक्त? Israel occupied areas में क्या हो रहा है इस वक्त? They're brutalizing women. Children are being killed. Women are being killed. Civilians, worshippers in and around Al-Aqsa Mosque, they've been attacking them. There's been smoke grenades, there's been rubber bullets, there's been missiles. This is the type of horror that's been happening in Israeli occupied Palestine. Or when we see stories like this कि कंगना कह रही है oh Muslims तो सारे ही ऐसे हैं, तो it just makes you flare up, and this is the whole point of this video. In another part of her story, she says it takes courage for a small country surrounded by all these Muslim countries जो उसको अटैक कर रही हैं. और उस इमेज में उसने दिखाया हुआ है कि there's an Israeli soldier and he's standing and protecting this woman and child. Then I'm looking at it and I'm like, this is certainly not what's happening right now. And I don't want to get into the historical context of what's happened, but currently this is not what's happening right now. What's happening right now is that women, children, civilians, they're being brutalized. That's the fact of it. This is what we need to talk about. This is what people need to know. People don't need to know these false allegations, this propaganda कि Muslims ही सारा हर वक्त कर रहे हैं and Israel is this force that's fighting against radical Islam, because that's not true. Kangana, मेरी ये problem है with people who generalize entire religions and generalize entire things, is that इतने ज़्यादा लोग होते हैं और वो सारे एक चीज़ नहीं कर रहे होते. जैसे इंडिया में एक प्रैक्टिस आई थी, कुछ लोग
कोरोना से बचने के लिए अपनी बॉडी पे और अपने मुंह पे पेशाब लगा रहे थे, काफ़ी हिंदूज ये कह रहे थे। अब मैं जनरलाइज करूँ कि ओवर $1 billion ऑफ योर पॉपुलेशन अपने मुंह पे पेशाब लगाती है, तो दैट वुडंट बी अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट? इट वुड बी सम सेगमेंट्स ऑफ पीपल। सो यू कैंट से कि भाई सारे मुस्लिम जो हैं वो टेररिज्म करते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। मैं टेररिज्म नहीं करता, मैं आज तक किसी टेररिस्ट को देखा भी नहीं है, राइट? एंड आई लिव इन द मिडल ऑफ लाहौर इन पाकिस्तान एंड आई हैव गॉन ऑल ओवर पाकिस्तान। आई हैव नेवर मेट any terrorist or any extremist that would want to blow somebody up. वो एक बहुत ही छोटा सा section of the population that are not Muslims, because Islam doesn't believe in extremism, in terrorism. Right? This is propaganda created to hurt Muslims and Islam, and this propaganda is created ताकि इसराइल जैसी countries ये सारे steps ले सके, जैसे वो ethnic cleansing कर रहे हैं। So, Kangana, I just like to say, before you spread any more misinformation, before you tell your millions of followers the wrong thing, I just want to say कि educate yourself. हर किसी को अपने आप को educate करना चाहिए, अपना सीखना चाहिए. So just educate about what's happening in Palestine and Israel right now. इस वक्त current situation क्या है? कितने लोग Palestinian मरे हैं, कितने लोग Israeli मरे हैं, कितने बच्चे इस साइड में मरे हैं, कितनी औरतें मरी हैं, हाउ मेनी हाउसेज हैव बीन टेकन ओवर, राइट? बुढ़े बुढ़े लोग, बच्चे, दे बीन किक्ड आउट ऑफ देयर हाउसेज, राइट? एंड दे हैव नोवेयर टू लिव, ठीक है, बिकॉज दीज पीपल आर ब्रूटलाइजिंग एवरीबडी विद इन साइट. सो फॉर यू टू सीरियसली से कि ओ हम इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ हैं इज़ सो स्टूपिड, because you're spreading this sort of hate that nobody should about any religion. And I'm not going to sit here and talk shit about any religion, because that's not what I do, that's not what we do. अब currently Palestine और Israel में ये हो रहा है कि ईस्ट जेरूसलम में शेख जरार की एक नेबरहुड है, जैसे बहुत सारी नेबरहुड्स होती है किसी भी कंट्री में, वहाँ पे बहुत सारे सालों से सिंस 1948 एग्जैक्टली बहुत सारे पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं, और मतलब 60 सालों से ऊपर मतलब वहाँ पे उनके घर हैं, दे बिन लिविंग इन दैट नेबरहुड, दे बिन सेटल्ड देयर, और अब इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस हैव कम ओवर दैट नेबरहुड. वो लोग जो भी बाहर निकलता है उनको ब्रूटलाइज करते हैं, औरतों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं. अल अक्सा मॉस्क के इन एंड अराउंड उन लोगों ने अटैक किया विद रबर बुलेट्स, with grenades, with the flash grenades, with gas grenades, और लोगों को that were worshipping, they were उन लोगों ने मारा. There were 600 wounded people and so many have died, including children and women, and that's what's happening in that neighborhood right now. Now legislatively Israel ने एक law pass कर दिया है कि if you can provide any sort of evidence जो कि 1948 से पहले डेट करता है, that oh you had some sort of stake or your great grandfather had some sort of stake in these lands, you can take it over. But ऐसा हो नहीं रहा. What's happening is कि ये लोग किसी भी घर में घुस जाते हैं and then they're like this is my house. And काफ़ी videos है on the net which I'll include here as well, जहाँ पे एक औरत अपने घर आती है and she's like this is my house and तुम मेरा घर छीन रहे हो, stealing my house. और आगे से वो बंदा कह रहा है that if I don't steal it, somebody else is going to steal it, क्योंकि ये लोग कर ही ये रहे हैं ये सारे. It's not कि वो ये हमारी प्रॉपर्टी थी, this is important property that they want and they're taking it over in a very brutalized fashion. क्योंकि ये ईद पैलेस्टाइन और जो लोग इसराइल में भी that are affected by the air strikes, it has been really terrible for them, and I can't even begin to imagine कि वो लोग what they must be going through, because we need to remember that at the end of the day we're all human beings. It doesn't matter कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई जू है, कोई क्रिश्चियन है, it doesn't matter वो क्या करते हैं, वो क्या बिलीव करते हैं, that has no basis to be treated in a different way. And whenever you have a system in a country जहाँ पे दो different लोगों के लिए, दो different religions के लिए
दो तरह के सिस्टम्स हों, दैट्स ऑलवेज अ वेरी टेरेबल थिंग. कि अगर आप सिर्फ इस बेसिस पे आपको कोई जॉब नहीं मिल सकती, या आपको एक जगह छोड़नी है क्योंकि आप मुसलमान हो, या सिर्फ इस बेसिस पे आपके साथ जुल्म हो बिकॉज आप एक हिंदू हो या एक क्रिश्चियन हो, तो वो गलत होता है किसी भी सिनेरियो में. तो इसलिए फॉरगेट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कि क्या हुआ, कितने मिसाइल्स, कितने वो पहले हुआ, कितने सालों पहले. वो वी नीड टू थिंक अबाउट इज़ कि अभी क्या हो रहा है, और अभी जो हो रहा है इज़ डेफिनेट ऑप्रेशन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज इज़ कि मैटर नहीं करता कि कितना बड़ा कॉज है या आप किस लिए फ़ाइट कर रहे हो. व्हेन इनोसेंट पीपल स्टार्ट डाइंग बिकॉज ऑफ समथिंग, then there's a serious problem. When children start dying, when women are being brutalized, when civilians, worshippers are being brutalized, then that's a time where you need to stand up और आपने कहना होता है कि बस अब और नहीं. And इसलिए this is so important for humanity, for us to continue forward, that we start taking a stand against oppression. And I just hope this can end peacefully for as many people as possible, and we find a peaceful solution to all of this. And I just want to clarify my position before I leave, that I believe जो Israel इस वक्त कर रहा है वो एक genocide है, वो एक ethnic cleansing है, और हम सारों को उठना पड़ेगा in support of Palestine और against Israel, because वो लोग जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है. And I just like to point out that Israel is one of the most advanced militaries in the world and has the strongest defense system in the world, and they're fighting a people that don't have a proper army. And these people, this neighborhood in particular, ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जो कि ये एक नॉर्मल सी नेबरहुड है जहाँ पे नॉर्मल से लोग रह रहे हैं, एंड देयर हाउसेस आर बीइंग टेकन अवे, एंड देयर जस्ट दिस इज़ जस्ट एथनिक क्लेंजिंग. नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू मेक श्योर कि इस वीडियो के बाद हम कुछ स्टेप्स ऐसे ले सकें जिससे वी कैन मेक अ डिफरेंस. और ऐसा नहीं है कि हम जाके बंदूक उठा के जाके लड़ सकते हैं, but we can make small changes in our lives that can maybe benefit somebody. जैसे कि the first thing you need to do, or even I or everybody, is to educate yourself. Learn about what's happening currently in Palestine, how people are being hurt and what's happening. Watch videos, read newspaper articles, anything that you can educate yourself with. The second thing, we're attaching a few links of a few charities that work to help Palestinians that are in trouble, and children and people that have been displaced. इन charities से हमारा बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है. This is just our research about what the best charities are that are helping the Palestinians. आप यहाँ पे donate कर सकते हैं. आप you can do your own research and donate to whatever charity you want, whatever organization you want. But if you have the extra money, these people really need it. This effort really needs it. These people are being brutalized.